सो नमस्कार ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास रे हमें से रेस जेस्टा पर पढुथुलु। तो रेस जेस्टा रो कैरेक्टरिस्टिक्स ओके इंपोर्टेंट केस लॉस से गुडा हमें देखथिलु राइट। आज हमें आउ दी तीनटा पॉइंट देखिबा रेस जेस्टा पर स्पेसिफिक केसेस ओके जोटी हमें रेस जेस्टा केमिति सेटी इंप्लीमेंट होबो सेटा हमें देखिबा। So first take down number 1 application of res gesta in rape cases. ठीक है application of res gesta in rape cases. res gesta doesn't not a rape case है ता सेतरे res gesta applicable हबो कि नहीं, that is the question. Okay, so आरो रूल टा हला या कि जति जोटी विक्टिम जे जेतोले ताको रिलीज करा होची जे अक्यूज ताको छाडुची कि से पळे आउची दौड़ी की से डायरेक्टली जाय कि सेटा पुलिस स्टेशन रे पहुंची तार मेडिकल एग्जामिनेशन ऑल दोस थिंग्स सेटा होची तो सेटा रेस चेस्टा अंडर रे जीवो। किंतु सपोज से घर को पळे आसला तो पेरेंट्स को तो मदर को कहला ओके तो सेही जगह रे आपण कहि परिबेनी कि एटा रेस चेस्टा अंडर रे जीवो। Okay, so that part you have to be clear. Sir, Right. outre repeat कर please. आमे स्पेसिफिक केसेस देखुछु जोटी रेस चेस्टाटा हमें अप्लाई करि परिबु कि करि परिबु। तो रेप केसेस रे त रूल टा या रहउची कि जति इमीडिएटली आफ्टर द असॉल्ट रेप परे संगे संग विक्टिम आसी कि पुलिस स्टेशन रे से जिंसटा कहउची ताकू संगे संग सेटू मेडिकल टेस्ट पे नहीं जाउचंती तो सेटा रेस चेस्टा अंडर रे जीवो। दैट मीन्स जति से घर को पळेला कि आउ कुआडे गला आउ ता परे जाई कि आसी कि कहउची किछि समय परे ओके बहुत टाइम स्पेंड हे गला तो सेटा आउ सेक्शन 4 ऑफ बीएसए रेस जस्ट अंडर रे जीवनी बट एविडेंस रहइबो इट विल बी एक्टिंग एज एविडेंस ओके बट नॉट अंडर सेक्शन 4 ऑफ बीएसए और सेक्शन 6 ऑफ आईए हैला। एटी जो मैं कहूछु ना सेटा हबनी रेस जस्ट हिसाब रे बट तारो जहाँ स्टेटमेंट्स अलगा प्रूफ से गुडा अलगा सेक्शंस अंडर रे निश्चित जीवो ओके बट रेस चेस्ट अंडर रे जीवा पई एति कथा कि आफ्टर दैट असॉल्ट सी आसी कि पुलिस स्टेशन रे से जिंसटा कहवा दरकार और ताको इमीडिएटली मेडिकल टेस्ट तारो हबा दरकार। जदि सपोज से एग्जांपल टा कोन नै छिना देयर इज अ पर्टिकुलर केस जोटी रेप विक्टिम ताको मदर को पाख घर को गले ताको मदर को पाख गले ताको मदर को पाख जाय कि सेठी कहले कि यू नो मो सारे एया हिच ओके आउ ता परे से पुलिस स्टेशन आछंदी तांकर एफआईआर ता दबे ओके सो से केस रे अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट एटा रेस चेस्टा रे जीवनी सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रे जीवनी जो टाइप सेक्शन 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम कारण से घर को गले घरे रहिले कि समय तापर आसिले पेरेंट मदर को संग इंटरेक्ट करले मे बी मदर किछि बुझे दिबे केमते कहबे बुझ पर सो हेडिंग दियंतु application of res gesta in rape cases एगुडा लिखिया किसी दरकार नहीं पॉइंट जदी लिखिया पे चाहो लिख परिबे spontaneity and contemporaneity ओके तारो जदी किछि अपन केस लगा कथा दिस वन यू कैन टेक रामेश्वर कल्याण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1952 तो एथरे कोन कहले सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट मेड बाय विक्टिम इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट could be admissible under section 6 of Indian Evidence Act 1952 रहता वो BSA नथिला ना the court highlighted that such statements being spontaneous and closely linked to the occurrence carry significant probative value ठीक है but तारा exception करो आ गोटे केस रे से victim घर को पळैथिला मां को कहला फर्स्ट तापरे गला पुलिस स्टेशन मां ताको नेकी गले तो सेटा
अलग ये एविडेंस तो नहीं हम से भावर नहीं बट सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेटा हम है गॉट इट लिखिले एमती आउ दी तीन टा पर्टिकुलर केसेस अच्छे जोटी की हमें देखिबा कि रेस जेस्टाटा केमती केमती हमरा अप्लाई होछ तो हाउ रेस जेस्टा विल बी अप्लाइड इन रेप केसेस क्लियर है ओके तापरे नेक्स्ट यू कम टू नाउ अबाउट एफआईआर देले ठीक है कैन एफआईआर बी ट्रीटेड एज रेस जेस्टा okay can FIR be treated as res gesta ठीक so that is the question FIR टा res gesta हिसाब रे आपण नहीं परिबे कि नहीं okay so just take down this and then we will discuss ए जो res gesta टा ओके एफआईआर हिसाब रे आपण नहीं परिबे कि नहीं कौन तार रूल्स करिक अछि दैट पार्ट वी विल डिस्कस ओके तो रेस जेस्टा टा एफआईआर टा रेस जेस्टा हिसाब रे आपण नहीं परिबे बट तारा कथा हला कि जो लोक से एफआईआर दबो सीए निजे देखिथिबो से जो टोटल इंसिडेंट देखिला परे से इमीडिएटली आसी दिबो इमीडिएटली माने रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम इज अलाउड इमीडिएट संगे संगे आसी सेमती नहीं से आसी पुलिस स्टेशन रे पहुंची दिबो आउ पुलिस स्टेशन रे से जा कहया कथा कहतो ओके सो एफआईआर एज रेस जेस्टा ओके कंटेम्परेरी रहइबो डायरेक्ट एसोसिएशन रहइबो स्पॉन्टेनिटी एंड ओवरवेलमिंग इफेक्ट एगुडा रहिबा कथा ओके सिंपल भाषा रे कहले ये देखि छि निजे आखि रे देखि थि बस जिंसटा हेतिबा इंसिडेंट ये तापर आसी ओके पुलिस स्टेशन रे एफआईआर टा दबो विद इन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम इमीडिएट न होई पारे टिके समय पर देले भी इट इज फाइन ठीक है सी आसी लिखे बस एफआईआर टा देन इन दैट केस एफआईआर कैन बी ट्रीटेड एज रेस जेस्टा not in other cases so for example dekhantu Saval Das versus state of Bihar in this case neighbor of the deceased lodged FIR immediately after hearing the victim's cries the Supreme Court held that FIR was admissible as it was contemporaneous with the incident and formed part of the same transaction admissible under section 6 of Indian Evidence Act mane res gesta hisabe taku court grahana kale okay but jodi बहुत पेरिफेरी रही टाइम रही से जगह रे सेटा रेस जेस्टा ओके इट विल नॉट बी रेस जेस्टा ठीक अछि तो एफआईआर टा रेस जेस्टा हे परिबो कि नहीं राइट तापरे आ गोटे पॉइंट लेखंतु एटा ऑलरेडी हमें लास्ट क्लास से पढ़ देथु बट स्टिल देन स्टेटमेंट बाय स्टैंडर्ड्स statement by bystanders bystander की ता डेफिनेशन टा भी मन रखिबे statement by bystanders ठीक है bystanders ଆଉ onlookers ଭିତରେ डिफरेंस कौन तो bystander जे ସିଏ ଦେଖିଛି ନିଜ ଆଖିରେ ଇନସିଡେंट onlookers ହେଲେ ଯେ ଇନସିଡେंट ହେଲା ପରେ ସେଠି ଆସିକି ଜମା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କଣ ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି whatever କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଦେଖିଲା bystander ଯେ ସିଏ ନିଜେ ଦେଖିଛି okay so who are bystanders likhi diyantu individuals present and witnessed the incident but not directly related to it semane part nuho incident
bystander मान किंतु से देखी जंती कौन है और डिफरेंस बिटवीन bystander and onlooker generally सी निजे बोधे देखिनी से परे आसिकी पहुंची पाटुंड हैला परे तो सी निजे इंसिडेंट ता देखि हैला बुझी परले सो bystander रो स्टेटमेंट ता रेस्ट जेस्टा हबो कि नहीं ओके सो that is what we have to see ओके तो जोड़ा बेसिक जिंस गुड़ा हमें पढ़ी आगु सेम जिनस एथरे भी रहिबो कि स्पॉन्टेनिटी थिबो से पाखापाखि थी जो इवेंट हेजी ओके देन ही विल बी नियर इट सो admissibility of bystander statement under register proximity to the event एटा से पाखे थिबो न देखिबो केबे निजे तापर स्पॉन्टेनिटी ओके या स्टेटमेंट से कहिची सेगुड़ा इधर से इवेंट ता चली थिला भितरे हबो इंसिडेंट ता किबा जस्ट आफ्टर इट से कहबो ठीक अछि किबा जस्ट बिफोर इट भी कहते सपोज पब्लिक प्लेस रे आमे ठियाई की समस्त हम किछ जोटे खाइबा खाउछु सेपडु गोटे बड ट्रक टे आछी पूरा स्पीड रे हैला जस्ट बिफोर द एक्सीडेंट से बायस्टैंडर जे से कोचे कि कोन एपट आछी तो चढ़ी जीव लोकन ऊपर तापर एक्सीडेंट होछ इमीडिएटली बिफोर द एक्सीडेंट सेही कथाटा कहितले ओके तो ये भी रेजिस्टर अंडर रे जिवो तापर एक्सीडेंट हैला पर से पुनी आ कोन कहितबे कि मार देला ए कले देखला सब से थरे ओके सो स्पॉन्टेनिटी during the event, just before the event, just after the event. That is spontaneity. भाविबार समय नहीं. And there must be some direct association. Okay. So तारा निजर direct association नहीं. किंतु सी जो statement टा दोची. Okay. से देखी थी कौन ही incident टा. से देखी थी बादर का. That is the fundamental difference between bystander and onlooker. Onlooker से देखी नहीं जिनसे हबर. से पार्टनर सुनी के ऐसी पहुंच. Okay. So bystander रो स्टेटमेंट रेजिस्टर रे जाई परिबो किंतु एतिकी जिंस आपनकर ओके हबार अछि तले को सुप्रीम कोर्ट केस हम देखिबा गोटिए केस सफिशिएंट ओके वन केस इज सफिशिएंट गोटे केस हम देखिले सेटा फाइन ओके सो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन रे ए केस टा पले ओके दैट इज टोटका वर्सेस स्टेट ओके the accused was tried for the murder of the deceased that is Bhutai. After the incident, large number of individuals gathered at the scene. The court held that statements made by these bystanders who were present at the time of incident, it is important, not a coming after that, and made spontaneous declarations related to event were admissible under Section 6 of Indian Evidence Act, which is Section 4 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam, as part of the same transaction. Okay. So, here are some special considerations when we are discussing register. Hello? The register concept first to जहाँ अपन लिखी चलती है अपन notes रे सारे ताकुटी के देखो. These 3-4 are special conditions when we consider register.
एनी डाउट्स कार जदि किछि डाउट अछि ताले पचारंतु जनरल कांसेप्ट तो हमें बुझी परलु ठीक अछि जनरल कांसेप्ट तो हमें बुझी परलु बट ए जो 5 मार्कर क्वेश्चन पड़े कि 10 मार्कर पड़ी पारे जोटी कि आपन पचारियो से रेस्ट चेष्टाटा रेप केस रे कि गोटे एफआईआर केस रे ओके कैन एफआईआर बी ट्रीटेड एज रेस्ट चेष्टा ठीक अछि तो सेगुड़ा से जगह आपन को एटा देखिया पे पड़े ओके सो एटा हला सेक्शन 4 हमरो गला नाउ बीएसए रो सेक्शन 5 को जीवा ओके बैर एक्टिविटी के देखो तो आपन सेक्शन 5 ऑफ बीएसए ओके सेक्शन 5 ऑफ बीएसए जोड़ा कि हला आपन सेक्शन 7 ऑफ आईए ओके इंडियन एविडेंस एक्ट रे सेटा सेक्शन 7 थिला राइट एटा टिके तार कंटेंट टा आपन को बुझिया पड़िबो सिंपल जिंसटा अछि बट ताको भांगी के आपन को बुझिया पड़िबो आ माने सब कोन सो दिस इज योर सेक्शन 5 ओके facts that are occasion cause or effect of facts in issue or relevant facts number 1 occasion number 2 cause number 3 effect either fact in issue or irrelevant factor से तीनटा 1 2 3 नंबरिंग कर दे occasion cause or effect तो cause और effect टा एमती नो भी immediate हवा कथा परे भी टिके effect टा हेले सेटा भी होबो the relevant fact की fact in issue okay or which constitute the state of things under which they happened or which afforded an opportunity for their occurrence or transactions all these will be relevant ठीक है हमें एगुड़ा कहीं पढ़छु एगुड़ा relevancy of facts okay এই chapter টা anything which is related to fact in issue or relevant fact सेड़ा relevant हबो ता छोड़ा आउ कोन relevant हे पारे सेगुड़ा हमें पढ़छु तेनु क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट जोड़ा रेलिवेंट जोड़ा रेस्ट जस्ट आपण कहले सेक्शन 4 रे पढ़ले सेक्शन 5 रे आपण पढुचंदी कि फैक्ट्स व्हिच आर ओकेजन कॉज और इफेक्ट ओके ऑफ फैक्ट्स इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट्स तो ए गोटे गोटे भांगी की देखिबा ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट्स बिफोर दैट आपण तार इलस्ट्रेशन जा देछि सेटा देखो what are the illustrations which are given in your barrack ताहले आपण जानि परिबे क्लियर ओके तीनटा illustration आपनकर देछि section 5 so just go to these illustrations first illustration dela the question is whether a robbed b the question is whether a robbed b the facts that shortly before the robbery b went to a fair with money in his possession and that he showed it or mentioned the fact that he had it to third persons are relevant ठीक अछि से थर्ड पर्सन भीतर ए थे पर किबा से थर्ड पर्सन भीतर ए रोड सांग थाई पारे ए रोड भाई थाई पारे जे असी एक को कहला कि से एते पैसा नहीं आछि फेयर को ए ता पर तको रॉब कर देला ओके ता परे तो क्वेश्चन इज वेदर A murdered B. Marks on the ground produced by struggle at or near the place where murder was committed are relevant facts. Okay. आपण मर्डर गोटे हैला सेठी बड़िया बड़ी स्ट्रगल हैला तो सेटा कोन इज द यू नो बेसिकली आपण सेठी दि जण को भीतर झगड़ा हैला बोली ओके से मार छुड़ा रहिला राइट तो सेटा भी रेलेवेंट फैक्ट सब the question is whether A poisoned B. The state of B's health before the symptoms
ascribed to poison and habits of B known to A which afforded an opportunity for the administration of poison are relevant facts. Okay. So जोटी की opportunity पूरा last part रे कहला और which afforded an opportunity for their occurrence or transaction. Okay. से जानी ची कि ये खाइला पर immediately पानी पीबो बहुत पानी पीबो पानी रे भी समस्या दिछि ये खाई सारला संग संग पानी पीला और तापरे poison had its effect. Okay, बुझी पाछन. So ये जो examples देछि illustration रे जहाँ जहाँ से कहूची से तारा example रा देछि. Okay, so first टा देखो occasion occurrence रू occasion ठीक है occur कला सेटा right. Facts which are the occasion cause or effect immediate or otherwise माने संगे संग हो कि टिके परे हो एई केस रे चोरी केस रे मे भी संगे संग हला. ओके सेडे मेला को जाउतला सेठी से जण कहला कि देखो मु 10,000 टका आनछि किना गिनी करबी आइदर कहला कि देखेला से जागु देखेला से आ जण सेडा इंफॉर्मेशन पास कर दला कि ये 10,000 टका नहीं आछ. Then the theft occurred. Okay, then the theft occurred. So एई जो फैक्ट ता जोटा से जो occurrence को cause कला okay सेटा फर्स्ट अपन गला which are the occasion right. First example ta jo dela occasion. The question is whether A or B the fact that shortly before the robbery A went to a fair with his money in possession and showed it or mentioned the fact that he had it to third persons are relevant because of that fact okay the robbery occurred. है तापर आसिला cause or effect. सेकेंड जोटा सेटा हला इफेक्ट ठीक अछि बाडिया बाडी हेले दी जण तो तार स्ट्रगल बेले सेठी सब स्ट्रगल मार्क्स घास रे रहि गला. दिस इज द इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रगल. ओके से स्ट्रगल पई से जो ताकर यू नो फाइट हेला जोत पई बीरो डेथ हे गला ए ताको मर्डर कर देला ड्यू टू दैट दिस marks were there. Okay, so eta kon hela these are the effect and immediate effect obviously sange sange hela na jetro se taku tonti chipila ki ja bi kala se foil re se marks ura padi gala clear proof that there was a struggle. Okay, so eta kon hela effect jo cause or effect dekho. Okay, tapare asila kon state of things under which they happened or which afforded opportunity for occurrence of transaction. जेमति कि थर्ड केस से कहला जणे जानी छी ए लोक ओके ये एई टाइम में पानी पीबो तब विषम से दिछ आगो ठीक अछि. सेकंड जानला से त सांगो कि कोन जानी छी त रूटीन टा which gave him an opportunity okay for occurrence of that transaction. In this case that is the murder transaction एटी कोन mixing of poison in the water. बुझिपार सो एगुड़ा टिके माइंड रे रखिबार अछि राइट. अच्छा मु दीटा जिंस भूली गली सेटा सेटा टिके लेखंतु एथरे गोटे पॉइंट आउ लेखिया पड़िबो रजिस्टर रे. रजिस्टर बहुत गुडे एप्लीकेशंस अछि किछिटा जोडा हम एग्जाम रे पड़े किबा हमकु जानिबा दरकार सेटा मु आपन कहली ठीक अछि. आ गोटे लेखंतु एटा रजिस्टर रे लिखियो 4 रे extrajudicial confession. Can extrajudicial confession be considered as register? Hela question hela can extrajudicial confession be considered as register? Extrajudicial confession माने कोन के मते कहियो. What do you mean by extrajudicial confession? सर मैजिस्ट्रेट को विदाउट प्रेजेंस हाँ मैजिस्ट्रेट को किंबा कोर्ट सामना रे ता छड़ा जोठी भी आपण कन्फेस करूछन बाहर आपण रास्ता रे कोठी आपण सांग गोटे कन्फेस कले
एटा एक्चुअली मु एमती के करी मु कर देछि ठीक अछि सो एविडेंस लॉ रे मन रखिबे any kind of extrajudicial confession is prima facie a weak evidence okay तेणु unless there is a chain of events court will not accept it as res gesta ठीक है so take down extra heading टा देबे extrajudicial confession as res gesta okay तापर लिखंतु सेटा extrajudicial confession prima facie is a weak evidence सेटा पूरा अंडरलाइन करम extrajudicial confession कोर्ट को सामने रे सब बेले सेटा weak टाइप रो एविडेंस ओके तो ता ऊपर रिलाय करी कन्विक्शन करी का ही परिबो extrajudicial confession prima facie is a weak evidence and court is reluctant weak evidence and court is reluctant in the absence of a chain of court is reluctant in the absence of a chain of related circumstances chain of related circumstances to base a conviction on it to base a conviction on it so court is reluctant okay court conviction kariben tapare to base a conviction on it है ना एटा को केस रे कहिथिले देखंतु देवीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2019 देवीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2019 सिंपल भाषा रे कहले एटा वीक एविडेंस ओके दिस इज a weak evidence any extrajudicial confession is a weak evidence Excuse me, sir. हाँ कौन Sir, से case study क्या होता है repeat कर रहे हैं केस रो नाटा extrajudicial हाँ, confession रो देवीलाल DEVI देवीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2019 रो केस टा देवीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2019 Yes, sir. Thank you. एटा सेक्शन 4 कथा कहली रेजिस्टर राइट तो सेक्शन 5 टा समस्त बुझी पारले से जो तीनिटी जिंस आपण कहला ओकेजन ओके जो जिंसटा आकार करूची ओके सेटा भी एंड रिलेटेड टू फैक्ट इन इश्यू रेलेवेंट फैक्ट ठीक है सो नंबर 1 ओकेजन नंबर 2 कॉज और इफेक्ट out number 3 state of things under which it happens okay जो थ्रू अपॉर्चुनिटी टा मिलला से जिंसटा करिया पे 5 टा टिके पढंतु ठीक रे if you are able to understand if you are not able to understand then tell me we will discuss it further okay यदि टिके भी डाउट होची ता ऊपर ताले पचरम nine no doubts then we'll move to the next अच्छा मु
दी तीन एग्जांपल आपन को देबी हैला मते कहबे ए जो तीनटा आपन देखिले इ ता भितरु कोटा हो I'll give you some examples related to that. Okay. So you will tell me it occurrence re gala, cause effect re gala. Okay. Kimba apanakara any other area se tachu. Right. So suppose apana कहबे what a murder trial chalchi A has killed B. Okay. A has been accused of killing B. Right. B रो dead body टा गोटे suitcase रे मिलची. Okay. गोटे रेलवे ब्रिज पाखरे. Right. So ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଚାଲିଛି it is said that the reasoning ଟା ଦିଆ ହେଲା କି ଯାହାର ଡେଥ୍ ହେଇଛି ସେ ବହୁତ ଗୁଡେ ପଇସା ଦେଇଥିଲା B had given lot of money to A had to return A could not return okay so B ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରେସରାଇଜ କରୁଥିଲା ପଇସା ଦିଅ ସେ ତାକୁ ସେଇ ଦିନେ ଡାକିଲା ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେ ତାପରେ ତାର ଡେଡ୍ ବଡି ଟା ମିଳିଲା okay so ଏବେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ point number 1 that he was indebted okay ଯାହାର ଯିଏ accused ଅଛି ସିଏ indebted ଥିଲା victim ତାଠୁ ପଇସା ନେଇଥିଲା ଫେରେଇ ନଥିଲା ତ ଏଇଟା କଣ ହବ ଏଇ ଯୋଉ particular fact ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା occasion ହବ Sir, cause cause. ହବ Sir, it may be a effect cause. ହବ ନା opportunity ହବ cause okay ସେ ଫେରେଇ ପାରିଲାନି ପଇସା ସେଥିପାଇଁ ମର୍ଡର ଟା ହେଲା okay cause ତାପରେ ଯେମିତି ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିଥିଲୁ ସେ ତାକୁ ଯୋଉ ଡାକିଲା ସେ ଜାଣିଛି ତାର ଲେଟ୍ସ ସେ you know କେମିତି କଣ ସେ ତାର ବିହେଭ କରେ ସେ କେବେ ୱେପନ୍ସ ରଖେନି ପାଖରେ ଠିକ ଅଛି and ସେ ତାକୁ ଲେଟ୍ସ ସେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେ ଜାଣିଛି ଯେ accused ସେ ଜାଣିଛି କି ଯେ deceased ଯେ victim ସିଏ ତାକୁ କିଛି ଫିଜିକାଲ କିମ୍ବା କିଛି ଡିଜିଜ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ତା ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ଚିପା ହବ କି ତାକୁ ଯଦି ତାର ବ୍ରିଦିଂ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହବ ସେ ରହିପାରିବନି ଲେଟ୍ସ ସେ ତାର ଲଙ୍ଗସ ର କିଛି ଇଶ୍ୟୁଜ ଓକେ ହ୍ୱାଟଏଭର ଓକେ ସେଟା ସେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲା ସୋ ଲେଟ୍ସ ସେ କଣ କଲା ନା ତାକୁ ଗୋଟେ ହାଇ ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ଜାଗାକୁ ନେଇଗଲା ରାଇଟ ତାକୁ ସେନ୍ସଲେସ୍ କରିକି ଗୋଟେ ହାଇ ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ଜାଗାକୁ ନେଇଗଲା ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଅଟୋପ୍ସିରେ ବାହାରିଲା କି ଡେଥ୍ ହେଇଛି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗୁଁ ତାର ଯେହେତୁ ଲଙ୍ଗସ ଖରାପ ଥିଲା ଓକେ ତ ସେଇ ଯୋଉ ତାର ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯୋଉ କି ଆକୁ ଏଇ ଡିଜିଜ ଟା ଅଛି ଆଉ ଦେନ୍ he took action according to it ସେଇଟା opportunity under ଯିବ because he knew that ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଅଛି so he waited for that opportunity ତାକୁ senseless କେମିତି କରିକି high altitude କୁ ନେଇଗଲା okay so ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଯୋଉ occasion cause effect ଆଉ opportunity ଚାରିଟି ଜିନିଷ କହୁଛି ଏଥିରେ ଏଇ ଚାରିଟି ୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାର ଅଛି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ପଡିଲା occasion cause effect opportunity ओके अच्छा आउ केटा जिनस देखिबा सपोज चोर आसला हम घर चोरी करिकी गला तार फुटप्रिंट से वर्षा हेतला सेदिन तो
घर अंगण से बाहर सब ओके तार फुटप्रिंट्स रही गला तो चोर आसिक चोरी करी गला कि असाइलेंट आसिक मर्डर करी गला किंतु तार फुटप्रिंट्स रही गला एटा कौन आसीतला घर को Effect. यस दैट विल बी इफेक्ट फुटप्रिंट्स हला फुटप्रिंट टा काई पड़ला से आसीतला सेठी आसिक मर्डर करी चोरी करी जा करी जाइछ ओके so that is the effect he came and he left his footprint एटा हला effect ओके तापर धरंतु हाउस ब्रेकिंग से आसला चोरी करने से भाभी घरे किए ना सर्वेंटा घरे अच्छी ये साउंड शुणी सर्वेंट पलि आसला सी डरिकी गोटे फ्लावर गस थिला से फ्लावर गस को सर्वेंट मुंडरे बाड़ेदेला सर्वेंट इंजर्ड हो गला सो इंजुरी टू दैट सर्वेंट सेटा कौन हम दैट इज आल्सो इफेक्ट ओके कहीं ये तो चोरी कला चोरी करथुला एंड सेही ट्रांजैक्शन रे ताकू बाड़ेदेला ठीक अच्छे तार इंजुरीटा है इफेक्ट ऑफ दैट असॉल्ट ओके तो ये सब रेलेवेंट हम राइट तो तापर आउ गोटे से फ्रेज यूज करछि देखंतु स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर व्हिच दे हैपेंड ओके तो स्टेट ऑफ थिंग्स कौन जेतबले आपनकर जो अकरेंस टा हैला सेतबले स्टेट ऑफ थिंग्स कौन थिला तो फॉर एग्जांपल गोटे आपण नै परिबो वेदर केमती थिला सेतबले ओके सो सपोज साइड रे जो रूम रे मर्डर हैला ता साइड रूम रे बहुत लोक थिले केही किछि सुनलेन गुली रे मारछि कि ता तंटी चिप से बहुत चिल्लै काहू किछु कहै जोर वर्षा होता जोर बिजुली मारुला किसी there was thunder and lightning there was heavy rain due to that sound side room wala तो ये जो weather condition था this is example of okay state of things under which the transaction or the incident happened right state of things suppose अपना गाड़ी रे जाउछन ब्रेक फेल हैला ते तापर जा जा हैला सो जो ब्रेक फेल टा हैला राइट द स्टेट ऑफ द थिंग व्हीकल बीइंग द थिंग हियर तार कंडीशन कौन थिला दोस काइंड ऑफ थिंग्स तो वेदर हे गला ओके कि जोडे व्हीकल रो स्टेट हे गला एगुडा सब स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर व्हिच दे हैपन ते माने एटी हैला से इंसिडेंट ट्रांजैक्शन ओके बुझी पाले एटा कांसेप्ट सो दैट इज बेसिकली योर सेक्शन हाँ Sir, any habits or allergies or anything the person may have goes into opportunity, right? Or does it go into state of things? allergy again if someone has the knowledge that this person is allergic to mushroom okay so that fact that I have the knowledge that the victim is allergic to mushroom ठीक अछि सेटा हला opportunity से that means मते देखिवार अछि मु केमति कोन करी ताको मशरूम टा खुआई देबी ताको मशरूम खुआई देली तापर तार साइड इफेक्ट स्टार्ट हेगला सेटा इफेक्ट होला बुझि पाले सो को पॉइंट रे आपण कहउचंती ता ऊपर डिपेंड करिवो when the mushroom when he has eaten the mushroom and suppose he is unable to breathe that is the effect of eating the mushroom but that knowledge which gave me an opportunity to do that ठीक अछि so सेटा हला opportunity in the sense that I had the knowledge सेते मते गोटे opportunity by मु परंतु मते से knowledge ता नथंता कि ये लोक मशरूम को एलर्जिक अछि तो मु मशरूम जगह तक मैंगो खुआई देथंती किछि एही नथंता तार ओके तार हेला कोन पय काहे ना मोर आगुरु से knowledge ता थिला I had prior knowledge of it maybe मते के कहिथिला
कि मु तो भलो सांग कि मोर मु किसी ता ऊपर रेकी करछि सर्वेलेंस करछि आई हैव सम इंफॉर्मेशन ओके गॉट इट सो Sir, in this एथरे case, intention टा matter करिवनी कि? हाँ इंटेंशन मैटर करू किंतु एठी हमें सेक्शन 5 रे इंटेंशन विषय तो हमें पढुनु सेटा नेक्स्ट ओके जतले हमें मोटिव को जिबा जोड़ा कि नेक्स्ट सेक्शन रे अछि एठी हमें खाली जानिया पे चाहूछु कि गोटे जदि हमको एग्जांपल दिया हला एई चारिटा भितरु कोटरे हमें ताको डिवाइड कर परिबा ओके दैट इज आवर ओनली कंसर्न राइट ता माने कोन ना जदि मते गोटे एग्जांपल दिया होची सेटा ओकेजन रे नेबी ना कॉज रे नेबी ना इफेक्ट रे नेबी ना अपॉर्चुनिटी रे नेबी ना से जो यू नो द स्टेट ऑफ थिंग्स से तो से तो इलस्ट्रेशन देइछ तारा डायरेक्ट तो हमारा सेक्शन 5 रे वी आर ओनली कंसर्न्ड विथ दिस फोर थिंग्स occasion cause effect opportunity we are not going into motive intent जोटा कि नेक्स्ट सेक्शन रे अछि बुझि पारलो तो सेक्शन 5 रो एम टा कोन कि सेक्शन 5 रे से कोन कहूची बेसिकली ओके तो मोटिव करिका से गुडा आपण नेक्स्ट सेक्शन रे देखिबे सेक्शन 6 रे ओके आउ केटा पॉइंट लिखंतु से सेक्शन 5 रो नेक्स्ट पॉइंट लिखंतु सिमिलर फैक्ट्स हेलो सिमिलर फैक्ट माने बुझ पाउछंती कोन व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलर फैक्ट्स एनीवन एंड हम कहू फैक्ट इन इशू relevant facts and similar fact माने कोन what do you mean by similar fact Facts that are similar in nature. okay ठीक अछि similar in nature acceptable to a large extent तापर आउ कोन कह करे let's suppose Mr. सर A समानता तथ्य हाँ समानता तथ्य कौन कहले आउथरे कहले बुझी परलिनी ठीक रे सर समानता तथ्य हाँ समानता तथ्य आपण कहउछन्ती ओके सी 2 इयर्स अगरु गोटे मर्डर हेतिला से जो अक्यूज थिला से तळे मर्डर हैला okay before murdering he first went to a temple then he went to the barber okay तापर गोटे छोट पिलार मर्डर हैला बळी हेला त then तापर 2 वर्ष परे एग्जैक्टली सेम जिंस होउछ ओके आउ सेम लोकटा कोच किंबा सेम स्टाइल रे होउछ ओके सो जनरल रूल कोन जदि फैक्ट सिमिलर अछि ओके ता माने कोर्ट तको एडमिट माने तको यू नो एडमिट करिए बोली किछि माने नै एटा जनरल रूल टा सो इट इज नॉर्मली इनएडमिसिबल ओके ओटे सिमिलर फैक्ट तो जदि फैक्ट टा सिमिलर अछि बोली एडमिसिबल हे जिवो सेमति माने नै ओके बट जदि एते क्लोज कनेक्शन अछि फैक्ट्स भितरे सिमिलर फैक्ट्स भितरे ताहले कोर्ट मे थिंक ऑफ इट
ठीक अछि तो लेखंतु हेडिंग दियंतु फर्स्ट सिमिलर फैक्ट्स सिमिलर फैक्ट्स ओके सेक्शन 5 रो डिस्कशन हमें को similar facts. So, question is whether similar facts will be admissible, whether similar facts, okay, will be relevant. So, first point lekhandu, general rule of inadmissibility. Normally speaking, a fact, court will not consider a fact as relevant because it is similar, okay, to another relevant fact. Similar. So, as general principle, the law does not permit proving a disputed fact, that is a fact in issue, merely by showing that similar events of actions have taken place on other occasions. Okay. So, suppose Mr. A gote चटकणा मते मारले अछि मु जाई कंप्लेन करली कि मिस्टर ए मते चटकणा मारले कोन प्रूफ अछि ना ये काली भी आउ जण को चटकणा मारथिले परदिन भी आउ जण को चटकणा मारथिले ठीक अछि उटा सिमिलर लगुछ बट कोर्ट सेटा एगुडा तो इंडिपेंडेंट जिंस गुडा ठीक अछि से काली जण को चटकणा मारचंदी परदिन जण को चटकणा मारचंदी बोली एमती किछि माने नहीं कि से मते आज चटकणा मारथे बुझि पाले सो कोर्ट जनरली विल नॉट एडमिट इट बट एक्सेप्शन अछि देखिबा एक्सेप्शन टा को ओके restrictions on using prior misconduct जेटा एई केस रे आगुरु भी बाडे थिला ताले एबे आउ जो ता ऊपर ही सस्पेक्ट करचोंदी कि सही बाडे थियो the prosecution cannot present evidence of the accused involvement in unrelated past crimes or misconduct simply to suggest that accused is kind of person who would likely to commit the crime currently under trial. This prevents the court from forming a biased opinion about the accused character. तो आगु हम character evidence भी देखिबा बट सेटा एटी यदि prior misconduct अछि ओके तो ताकू गोटे अपन जनरली ताकू गोटे कहि परियन कि आगु एमती तीन थर करछन तो इथर भी सेई टाइप रो जिंस होछि तो ये करछन तो एटा हला जनरल रूल त माने जनरली सिमिलर फैक्ट्स okay becoming relevant facts generally court will not allow general rule तापर exception अछि general rule को कोन exception देखम an exception arises when those past acts are so closely linked पूरा पाखापाखी same जिंस होछ with the current incident that they help to identify the accused or clarify the circumstances of the case independent of any suggestion about accused general character केमती मु कहली 2 वर्ष आगु रोडे बळी हेतिला एग्जैक्टली जहा जहा हेतिला तार प्रथमे मंदिर गला तापरे यू नो व्हाट एवर जहा भी गला एथर को भी एग्जैक्टली सेमती हिच आर्थर को जणा धरा पड़थिला ता माने सेही करिवारो संभावना बहुत अछि बिकॉज़ इट इज सो क्लोजली लिंक्ड ठीक अछि सो दैट कोर्ट भाबी पारंती कि हां ये पूरा इत्ते सिमिलरिटीज अछि ओके तो जे आर्थर करथिला बहुत चांसेस अछि कि सेही एथर को भी करछ that is the exception to the general rule hela to likhi diyantu seta this is section 5 BSA similar facts likhi sarle acha तापर आउट हेडिंग दियंतु tape recorded conversation okay so under this section 5 and not only section 5 even section 4 okay जोटा कि register tape recorded conversation register रे भी रहइबो okay आउ relevant भी सेटा हबो okay so section 5 under that is admissible under BSA right
So take down heading दियंतु tape recorded conversation. Okay. So first है तार relevance कौन रहेगा? ठीक है. What will be its relevance? सेटा first लेको. Legal relevance under एटी एटा पुराना नोट था ସେଥିପାଇଁ से इंडियन एविडेंस एक्ट को रेफर करूछ. चलो आपण बीएसए हिसाब रे लेखन. So heading देले tape recorded conversation. So legal relevance under आपण बीएसए लेखन. Tape recorded conversations are considered relevant under एटा 678 लेखा है इंडियन एविडेंस एक्ट रे. आपण बीएसए रो लिखिबे 456. Okay, 456 under section 456 of BSA. So 4 रे कौन होची register, so they are treated as register. Okay, as part of register or immediate facts connected with the issue. Phone recording जदि आपनकर थिबो, tape recorded conversations. Okay, तापरे ताकू कंपेयर करूचंदी आपण photographic evidence सहित. A tape recording is similar to a photograph as both capture actual occurrences. Okay, related to the case. Thus, it serves as form of evidence depicting relevant ingredients. So, section 5 BSA under debate relevant about tape recorded conversation. एटा काहे हम पढुछि 5 मार्क क्वेश्चन 15 मार्क क्वेश्चन रे गोटे प्रथमे देइथिबो आपनकु. ओके, रेस जस्ट ऊपर कोन गोटे देइथिबो, तापर देइथिबो कि से आपनकर टेलीफोनिक ओके कन्वर्सेशन, tape recorded conversation. तो तार लीगल पोजीशन कौन. सो सेथि आपण अल्प टिके लिखिबे. ओके, सो it is admissible under section 5 of BSA, which is section 7 of Indian Evidence Act. So since tape recordings can explain or illustrate facts in issue or relevant facts, they are admissible under section 7 of the Act, section 7 of Indian Evidence Act. एटी आपण नोट करियो तो सेक्शन 5 लिखिबे ऑफ द अधिनियम. एटी एक्ट लिखाबन. ठीक है. आगुलो हमर अभ्यास को हम एक्ट लिखितो, किंतु बीएसए रे हमरो अधिनियम लिखिया पड़े. बीएनएसएस रे संहिता लिखिया पड़े. काहे ना ताकू एक्ट आउट कोड आउट कुआ जाउनी. तार टाइटल रे भी से ऑरटा देइनी. तेनु नॉन हिंदी स्टेट से सेमान जंती पूरा especially Tamil Nadu रे से माने असुविधा माने तको प्रॉब्लम लागु सेटा. बट एनीवे हमको से लिखिया पड़े. According to section 5 of the अधिनियम, not the act. एटा प्रथम रु टिके लिखिबे काहे ना जदि टिके ना आइडियोलॉजिकल वाला थिबो खाता करेक्शन करियर, you never know who is going to check your academics रे. सबले मन रखिबे बहुत टाइम मिले प्रोफेसर्स करके माने. एकेडमिक लाइफ रे अपन देखिबे कि टीचर्स मानकर स्ट्रांग आइडियोलॉजिकल बेसिस था. ये पूरा एक्सट्रीम राइट थिबो, ये एक्सट्रीम लेफ्ट थिबो, ये सेंट्रल वाला थिबो. ठीक अछि. किंतु आगुरो आईएएस खाता उडा जेएनयू रो प्रोफेसर्स बहुत देखथि. आज भी देखथि बट एटा बहुत बड़ा चेंज हैला. ओके, तो पिला भी आंसर सेमति लगथिले. ठीक अछि. अपन अकबर को ऊपर पढुथिले माने जो माने 300-400 वर्ष रूल करथिले ताको ऊपर पढुथिले. बट आहोम्स को ऊपर बेस पढ नथिले, तो जानि भी नथिले आहोम डायनास्टी कोन करथिले, कोन अछि बोली. जो डायनास्टीज हजार हजार वर्ष रूल करथिले, ओके, ताको विषय रे डाटा नहीं. कोन पे डाटा नहीं? काहे ना हिस्ट्री लेखिला कि इंडिपेंडेंस पर रोमिला थापर, ओके, हजार जन को नाम कहि परिबे. सब लेफ्टिस्ट थिले.
सेमानकर इंटेंशन थिला कि आम लेफ्टिस्ट माने जोने कम्युनिस्ट ओके से दुनिया रे जोठी के आपण जानतु खाली इंडिया नो से जो जगह रे रहिबे सेही जगह कल्चर अगेंस्ट से ताकर काम करे राइट इफ यू नो दिस ग्रेट पर्सन कॉल्ड ची बेगारा रेवोल्यूशनरी त ना भी जदी जान ना तो ताकू समस्त आपण को भीतर देखिथिबे कोन पई कने his photo is the most publicized photo in the world ची बेगारा ओके से बाबू से जन्म होइतिले अर्जेंटीना ठीक अछि अर्जेंटीना जन्म होइते सेठी ताकर एते रेवोल्यूशन करिका चललानी तो से तापर बुलिले डिफरेंट डिफरेंट जगह को गले क्यूबा को गले फिडेल कैस्ट्रो यू नो ओके फिडेल कैस्ट्रो पाखरे जाई सेठी ताकर रेवोल्यूशन कले गुडे जिंस कले पुनी बोलिविया रे पसिले साउथ अमेरिका आ बाकी सब जगह रे जाई कहले हम सेठी करबी एंड फाइनली ही वाज एलिमिनेटेड ओके जा भी हो माने मु एते जगह कहली आंसर जतरे लिखिबे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे जो लोक खाता चेकिंग करछंती तांका आइडियोलॉजी कोन आपण जानना किंतु तांका आइडियोलॉजी मस्ट थिबो ठीक अछि टीचिंग प्रोफेशन रे जे रहले तांको समय बहुत मिले तो से कोनोसी गोटा आइडियोलॉजिकल ओके साइड को जिबे राइट तो आपण को आंसर एंती लिखियार अछि जोटा ताको ऑफेंड करिवे राइट ही मे बी ए लेफ्टिस्ट ही मे बी ए राइटिस्ट जा भी तो बट आपण बैलेंस आंसर लिखि बुझिबे so keep that in mind so admissibility under section 7 of Indian Evidence Act section 5 of BSL ହେଲା ତ ଏଟା admissible ହବ ଏଟା relevant ହବ ओके कोटा tape recorded conversation right अरे tape record रे तो आजकल जो डिजिटल मास्टरिंग होची आपण कहबे से किए ताको भूलभाल भी करिकी कहा ना रे कहा वॉइस रे आसी यू नो सो सेथिपाई हमरो दीटा पॉइंट जानिबार अछि कि एडमिसिबिलिटी पाई एमती कोर्ट का आखि बंद करके एडमिट कर देबे कोर्ट देखिबे से टेम्परिंग हेछि कि नाही सेटा ओरिजिनल अछि कि नाही राइट ऑल दिस थिंग्स कोर्ट विल सी सो तापर नेक्स्ट से टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन अंडर लेखंतो कंडीशंस फॉर एडमिसिबिलिटी सो टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन आपनकर केतेबेले एडमिट हो कोर्ट केतेबेले ताको ओके एडमिट करिवे कंटेंट ऑफ द कन्वर्सेशन मस्ट रिलेट डायरेक्टली टू फैक्ट इन इश्यू जो विषय कथा होची सेटा आपनकर फैक्ट इन इश्यू ओके ऊपर थिबा कथा द वॉइसेस इन रिकॉर्डिंग मस्ट क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड एट्रिब्यूटेड टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स ओके तो वॉइस कहारो सेटा फोरेंसिक एनालिसिस रो आइडेंटिफाई होबा दरकार the accused and integrity of recording accuracy and integrity of recording must be established by proving that it has not been altered or erased ताको जंती डिजिटली मैनिपुलेट करि नांती भूलभाल कर नांती ओके तापरे कोर्ट also has to be ensure that it has not been tampered केमिति हबो protection against tampering there must be no scope for suspicion that the tape has been manipulated टेपटा जेतेबेले पुलिस कस्टडी को आसिरा पूरा प्रॉपर्ली रही के ताको नहीं नांती एनी चांस ऑफ एडिटिंग डिलीशन और टेम्परिंग मस्ट बी रूल्ड आउट टू मेंटेन द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द कन्वर्सेशन तो कोर्ट कोन करंती सेडा स्टेट फोरेंसिक लैब किंबा सेंट्रल फोरेंसिक लैब को दे दियो डिजिटल फोरेंसिक्स एडा आपण जदी गोटे कन्वर्सेशन को एडिट करिवे काटिबे पुनी ताको जोड़िबे ए सब जिंस करिवे तार गोटे सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर रही जाए तेणु फोरेंसिक एनालिसिस डिजिटल फोरेंसिक एनालिसिस करिकी आराम रे जानी हिबो कि एटा ओरिजिनल एटा कटा है कि पुनी जोड़ा है ओके कोर्ट को जदी स्टेट फोरेंसिक लैब कि सेंट्रल फोरेंसिक लैब रिपोर्ट देले कि एटा कटा कटी हेची ताले कोर्ट तार वैल्यू बहुत कमे देबे एविडेंशियरी वैल्यू बिकम्स वेरी लेस किंतु जदी आसिला कि ना पूरा ओरिजिनल अछि कोड भी कटा हैनी ता माने authenticity रहिला जहाँ पुआई चाहिए तो तब court will take it as very strong evidence okay बुझी पाले एटा so this is your section 5 जहाँ लिखिले आउ थरे थरे टिके देखन दो whatever you have written and then we will go to section 6 जोटा हला आपनकर section 8 Indian Evidence Act
Yes. Now come to your paragraph. Section 6 question of our directory. Motive, preparation, and previous or subsequent conduct. एथरे बहुत गुड़े इलस्ट्रेशन देछि जोटा गोटे गोटे कि हमें देखिबा. मोटिव फर्स्ट, तापरे प्रिपरेशन, तापरे आसिला कंडक्ट व्हिच मे बी प्रीवियस और सब्सिक्वेंट. प्रीवियस माने आगु कोन केमति से बिहेव करथिला, कोन करथिला, कोन सब करथिला, किंबा गोटे जिंस हैला पारे तापरे केमति बिहेव करछि. तो सपोज गोटे लोकटे वेरी हैप्पी गो लकी, बहुत भलो सबले हसी मजाक करथिबो, बट लेट्स से सर्टेन इंसिडेंट हैपन, चोरी हे जे जोटे मेजर चोरी गोटे हे गला ऑफिस रे. जेबेटी चोरी हे जी ए पर्टिकुलर एम्प्लॉय रो कंडक्टर टिके अलग टाइप रो रोच. से जो एते हॉस्पिटल गोटे सीरियस हे जे टिके कोन कहि देले माइंड पुट जेति के दरकार सेति कथा होची लोकन संग, एम्प्लॉइज का कलीग्स का संग आगुरु बहुत कथा होला, एबे जेति के दरकार सेति ता माने तार कंडक्ट रे किछि चेंजेस पोस्ट द रॉबरी, पोस्ट द थेफ्ट. ठीक अछि, पोस्ट द थेफ्ट ताले सब्सिक्वेंट कंडक्ट हला सेटा. ठीक अछि, प्रीवियस कंडक्ट मान या आगुरु से कोन तार सेटा रहले. सो मोटिव, प्रिपरेशन and previous or subsequent conduct. Any fact is relevant which shows or constitutes a motive or preparation or any fact in issue or relevant fact. Okay. ताको भांगन तो है section 6 subsection 1. Any fact is relevant which shows or constitutes इधर किसी गोटे प्रूफ करूची कि से निजे. ओके, तारी पार्ट कोन कोन. नंबर 1 कि बिट ए मोटिव, आमे मोटिव और इंटेंशन को एका हिसाब रे देखु. बट क्रिमिनल लॉ जतले आपण पढिबे देयर इज एबे बीएनएस सरला जो माने बीएनएस टा कंप्लीट करथिबे. मोटिव और इंटेंशन भीतर कोनटा डिफरेंस मते कहले जो माने ऑलरेडी सारी चंदी बीएनएस टा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिव and intention? ना दीटा जाको सेम जिंस, सेम नो. ठीक है, तो सेटा गुरु कहि देछि मोटिव और इंटेंशन आर नॉट द सेम थिंग्स, एट लीस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए लॉ स्टूडेंट. ओके, तो जेतल जिबा हम कहबो बट एटी हमें तो मोटिव रही कथा को. ओके, मोटिव कोन जणे काहे कि गोटे जिंसटे करूछ, कोन पैसे जिंसटा करूछ, किछि गोटे तार लाभ किंबा क्षति आर लोकर करिया काहे काहे से जनक लाभ किंबा क्षति करिया पे चाहू हैला. सो मोटिव ता बहुत ही इंपोर्टेंट, राइट. तेणु कोनोसी फैक्ट जोटा मोटिव को आपनकर देखौथिबो सेटा रिलेवेंट हे जिवो. केमिति ना सपोज ए मर्डर्ड बी. ओके, लेट्स से ए हैला हस्बैंड, बी हैला वाइफ. सो हस्बैंड मर्डर्ड द वाइफ. एबे 6 मास आगुरु से 2 कोटी टंकर गोटे इंश्योरेंस बार करथला वाइफ ना. वाइफ रो द अननेचुरल डेथ हवा आपको 2 कोटी टंका मिले. ओके, सो दैट इज वन पॉसिबल मोटिव. तेणु एई जो फैक्टटा ई गोटे इंश्योरेंस पॉलिसी 6 मास मर्डर आगुरु ओके हस्बैंड बाहर करची वाइफ ना रे सेटा रेलेवेंट हो. हैला फर्स्ट पार्ट का वाला मोटिव. तापर आसिला प्रिपरेशन. ठीक है, प्रिपरेशन लेट्स से गोटे पार्क को जाइथिले हस्बैंड वाइफ, वाइफ को कि हस्बैंड को ओके से यू नो से बोट रो केमती पड़ी के बुड़ी गला. ठीक है, किंबा लेट्स से 2 जन जाको बोट रो पड़ी गले, हस्बैंड बची गला, हस्बैंड को स्विमिंग जाना नथला, 2 जन को स्विमिंग जाना नथला, तथापि हस्बैंड सर्वाइव. ओके, बट वाइफ ड्राउन करी गले ना डेथ हो.
सेथर जमा पड़ला कि ये वर्ष हैला अंडर वाटर रही कि ब्रीदिंग लेसन्स नौछ हस्बैंड ठीक अछि तो ये गोटे आपण प्रिपरेशन हिसाब रे देखि परिबे कि आगु जाके एमती हबो कि मु मो वाइफ हम पड़ी जीवु पानी भितरे मोर तो मु अभ्यास कर देली 3-4 मिनिट मो रही जीवी ता भीतर लोक आसी हेल्प कर दे जे जार प्रैक्टिस नहीं से तो सर्वाइव कर परिबे प्रिपरेशन ओके फॉर एनी फैक्ट इन इश्यू और द रेलेवेंट फैक्ट मोटिव किंबा प्रिपरेशन हेलो दीटार एग्जांपल हम देखि मोटिव रो भी और प्रिपरेशन रो ओके सपोज गोटे लोक वेरी अनफिट मैन फैट मैन बट लास्ट 1 ईयर है से बहुत जोर दौड़िया प्रैक्टिस करते दौड़ी भी पार्थ ओके पाख बैंक रे चोरी है से जे रॉबर जे चोरी करी चोरी कला बहुत फास्ट दौड़ता ओके आउ तांकरी फिगर वालिया थिला ठीक अछि तो ये भी है प्रिपरेशन 1 ईयर है प्रिपेयर करछि ओके दौड़ी के राइट तो एटा है सबसेक्शन 1 सेकंड सबसेक्शन 2 द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी or of any agent to the party तार जदि किछि एजेंट थिबो माने ता संगे रिलेटेड थिबो ता पाई काम करथि जो माने कॉन्ट्रैक्ट करि जदि यू हैव स्टडीड एजेंसी ओके to any suit or proceeding in reference to such suit or proceeding or in reference to any fact in issue therein or relevant thereto and the conduct of any person an offense against whom is the subject of any proceeding is relevant if such conduct influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact and whether it was previous or subsequent thereto माने जो भी इंसिडेंट है ता आगुरु की ता परे आरो जो बिहेवियर की जो कंडक्ट जो लोगों पर सस्पिशन अछि तारा बिहेवियर की कंडक्ट ओके conduct of any person an offense against whom is subject of any proceeding तारी ऊपर अपन भाव सही करथिबो सीएल एक्यूज ओके सब्सिक्वेंट किछि माने आफ्टर द इंसिडेंट से किछि करूछि किंबा बिफोर द इंसिडेंट से किछि करूछि ओके तो ये है सबसेक्शन 2 सेक्शन 6 तापर जो कंडक्ट हमें कहलु तारा एक्सक्लूजन्स कोन सेटा एक्सप्लेनेशन में दूछ the word conduct in this section does not include statements unless those statements accompany and explain acts other than statements okay but this explanation is not to affect the relevancy of statements under any other section of this adhiniyam खाली यही सेक्शन पे यही एक्सप्लेनेशन टा काम कर कि कंडक्ट रे नॉर्मली स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड नहीं केतेबेले स्टेटमेंट इंक्लूडेड हबो when the statements accompany and explain act other than the statement ठीक अछि सो फॉर एग्जांपल गोटे स्टेटमेंट को होछि कि ये या कर देला से कर देला ठीक अछि आउ सेटा तार मोटिव ओके कि प्रिपरेशन कि तार कंडक्ट को कहउछि बेसिकली ता कंडक्ट को कहउछि अब गोटे स्टेटमेंट दउछंती ये आगुरु एमती 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 करथिला ठीक अछि लेट्स से मोर बगीचा रे एप्पल्स लगे दिली मु ताको आज तोली थांती देखला बेलू रात्रि के नहीं जाई ये लोक लास्ट 3 मास हला मोर डिफरेंट फ्रूट्स नहीं जाउछि ठीक अछि तो मु जदि स्टेटमेंट दउछि कि ये लोक लास्ट 3 मंथ्स हला मोर 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स ये चोरी करछि सीसीटीवी रे धरा पड़छि आज मोर सीसीटीवी टा खराब है okay so this will be a statement why because other than saying that he has taken my fruits okay mu gote particular fact ko indicate karuchi it accompanies and explains acts other than the statement cctv footage more that he has taken he has stolen my fruits last 3 months ago right second explanation ko kochi when the conduct of any person is relevant any statement made to him or in his presence and hearing which affects such conduct is also relevant तेणु गोटे लोक कहीं एमती बिहेव करुची
आगुरु की पछरे subsequent or before it. Okay, तो सेही लोक जो जगह रे प्रेजेंट अछि ताकू जदि किछि स्टेटमेंट्स some statements are made to him से लोक को किछि स्टेटमेंट डायरेक्टेड होछि से स्टेटमेंट गुडा भी आपनकर रेलेवेंट हो. ओके, से स्टेटमेंट गुडा भी रेलेवेंट हो. फॉर एग्जांपल समवन इज बिहेविंग वेरी ऑकवर्ड तो ताकू आपण ए पछते काई कि आपण एंती बिहेव करछ. ओके, व्हाई आर यू बिहेविंग इन दिस मैनर. ठीक अछि, so that your statement has been made to him. Okay, and or in his presence and hearing जदि ताकू भी आपण कहू नांती ताले आ का कहउछंती कि एंती काई कि बिहेव करछ तो सेगुडा भी सब रेलेवेंट हो. ठीक अछि, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग से सुनथिबे आइदर तांको पचले आपण काई एंती बिहेव करछंती नहले साइड रे जेठी अछि लोक काई एंती बिहेव करछ लोक सुनिला आपण कहि रे कथा. दैट इज सेकंड इज सो दैट आपण जो कहिले काई आपण बिहेव करछंती कि यार लोक कहले काई एंती बिहेव करछंती दैट विल आल्सो बी रेलेवेंट. सेटा भी रेलेवेंट हो कंडक्ट हिसाब. Okay, so it basically deals with 4 points. Section 6. It deals with motive, it deals with preparation, it deals with previous conduct, it deals with subsequent conduct. Charity जिनसों से होची. आउ ए सेक्शन रे आपनकर बहुत गुडा illustrations देछि जोटा हमें देखिबा एबे one by one we will see all the illustrations. एतिकी पर्यंत समस्त बुझी पारले ना कार कोन डाउट अछि कोन. Whether you are able to understand till this much. So illustrations to देछि दी दीटा करिके हमें देखियो. We'll take in pairs of 2. Okay, अब before going to the illustration आउ किछटा भी आपण पॉइंटर लिखि दियो. So take down next point. In Tapas Sarkar versus Strait of Tripura, TAPASH, Tapas Sarkar versus State of Tripura 2012. In Tapas Sarkar versus State of Tripura 2012, comma, the accused after commission of crime, the accused after commission of crime appeared at the police station and narrated the occurrence. Accused after commission of crime appeared at the police station and narrated the occurrence. Continue. He led the police party to his house. He led the police party to his house in presence of witnesses, and showed the dead body of his wife and produced the weapon of offense, murder weapon, and
produce the weapon of offense before the police officer. Produce the weapon of offense before the police officer. Tapare say next point. The police officer seized it. The police officer seized it by preparing a seizure list. The police officer seized it by preparing a seizure list in presence of witnesses. In presence of witnesses. Okay. Next point. Appearance of the accused at the police station. Appearance of the accused at the police station. So ninja police station asi कहला ना. Appearance of the accused at the police station and his giving of information. And his giving of information is admissible against him. Is admissible against him Sir, can you repeat the last part of the sentence? appearance of the accused at the police station and his giving of the information is admissible against him as evidence of his conduct. As evidence of his conduct. So सेटा तारा conduct, okay, subsequent conduct. ना murder कला पर ही दीटे काम कला ना. प्रथमे तो police station को आसिला. तापरे police को नेकी गला कहला एटी मो wife body अछि एटी murder weapon अछि सब देखेला. So it is a subsequent conduct of example. So this will be relevant. Okay, this will be relevant and it will be used against him. So this information is admissible. Okay. तापरे next point लिखंतु. In the case of NCT of Delhi, in the case of NCT of Delhi versus Navjot Sandhu, NCT of Delhi versus Navjot Sandhu, 2005 ର case এটা 2005. The Supreme Court held that conduct admissible under section 6 of BSA. ସେତେବେଳେ ତ obviously BSA ନଥିଲା 2005 ସେ evidence act ର section 8 କଥା କହୁଛ. Okay, ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମେ section 6 ପଢୁଛୁ BSA ର आर corresponding section ହେଲା section 8 of Indian Evidence Act. सर सर जेतला हमें क्वेश्चन आंसर लिखिबु एमति दीटा लिखियक पड़िबो ना सेक्शन 6 ऑफ बीएसए तारो स्लैश रे नले तको ब्रैकेटेड भीतर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एमति लिखियक पड़िबो की जदि मन पड़ुछि बहुत बढ़िया जदि न मन पड़ुछि अपन जोटा पढ़छन लिखियो. गवर्नमेंट रो कहया कथा कि नेक्स्ट एटलीस्ट 3 वर्ष पर्यंत से माने जो क्वेश्चन पकेबे सेतर दीटा जाक थिबो. आपण निजे जदि खाली एविडेंस पढ़छन आपण सेटा लिखियो. आपण एबे नुआ प्रिपेयर करथिन आपण बीएसए पढ़छन एविडेंस पढ़नथि आपण बीएसए लिखियो. जे कंपैरिजन करी पढ़छन
ओके सी दुटा जाक लिखिए से सब कॉन्सेप्ट हिसाब रे पढ़िले सुविधा रादर देन सेक्शन तो रेस जेस्टा आपण पढ़ले एटी मोटिव करके आपण पढ़ले ओके कंडक्ट आपण पढ़ले तेणु कॉन्सेप्ट पढ़ले कॉन्सेप्ट अच्छा ठीक अच्छे एटा इंडियन एविडेंस एक्ट रे सेक्शन 8 आउ भारतीय साक्ष्य अधिनियम रे सेक्शन 6 एटा मन भी रही जो किसी प्रॉब्लम पिला बहुत डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल स्ट्रेंथ बहुत पिलांकर मन रही से चार्ट फार्ट करती केते बेयर एक्ट तो चार्ट भी दिया एपट लिखाई इंडियन एविडेंस एक्ट एपट लिखाई बीएसए तार इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 6 एपट देथिबो सेक्शन 4 तो सेमिति भी रही पारे ओके इफ यू कैन रिमेंबर बहुत भलो इफ यू कैन नॉट रिमेंबर कांसेप्ट एटलीस्ट क्लियर हो स्टेप 1 एटा जो माने नुवा प्रिपेयर करथि जो माने ऑलरेडी मेंस देई चंदी एबे आपण खाली वैल्यू एडिशन को देखिबे मु कोन एक्स्ट्रा काना जनरल आंसर तो मु लिखि देबी यार मु एक्स्ट्रा टा कोन लिखिबी जोटा कि मो कॉम्पिटिटर्स लिखि नथिबे आ मते मार्क 1 की 2 मार्क एक्स्ट्रा इन ईच क्वेश्चन मिलियो बुझ गले तो आपण दि मन रखि परछन दीटा लिखियार किछि असुविधा नै बहुत भलो किंतु जदि सेडा पॉसिबल न होई परछि ओके एक्चुअली हमरा एनालिसिस जेतला आपण कोनोसी पेपर स्टार्ट करछंती तार जो 12 वर्षर प्रीवियस ईयर हमर तो सॉल्यूशन अछि बट आपण एनालिसिस करतो एनालिसिस करे जणा पड़िबो कि हमर एते ह्यूज सिलेबस देखा जाउछि किंतु 7टा रु 8टा कॉन्सेप्ट्स थिबो जा ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन पड़े मु जदि से 8टा कॉन्सेप्ट ठीक रे पढ़ी की गली से कॉन्सेप्ट्स रो सब मते जणा अछि ताले 6टा क्वेश्चन ता भितरु बाहरिबो ही बाहरिबो जूरिस्प्रूडेंस मु ऑलरेडी कहना बहुत टाइम लगे तको एनालाइज करिया ओके तो जूरिस्प्रूडेंस मु वर्ष आगु करथिली से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ओके क्लास पर से लिंक ता दे देबी तको देखिबे सेमती बाकी सब्जेक्ट्स वाला भी टाइम लगे बिकॉज़ यू हैव टू फर्स्ट कंपेयर 10 12 ईयर क्वेश्चन तापर तांकर कॉमन क्वेश्चंस कोन सेगुडा कंपेयर करके अपन लिस्ट बाहर कर और सेथरे अपन देखिबे सेति की लिस्ट रो जदी आंसर हे जाउची यू कैन इजीली 100% अटेम्प्ट कर 100 माने 12 रु 6 टा क्वेश्चन रिपीट हबो ही हबो नुवा टाइप रो क्वेश्चन जंती गोदिटा पडियो अनलेस रेडिकल चेंज हबो क्वेश्चन पैटर्न पूरा क्वेश्चन पैटर्न ही चेंज ताले अलगा कथा बट सेटा ना क्वचित हबो आ जदी भी हबो गोटे पेपर रे हबो लास्ट ईयर प्रोसीजरल रहितला एई वर्ष ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करी करे हला मार्किंग भी सेमतिया ओके एई वर्ष इंग्लिश रे बहुत टफ मार्किंग हिच पर्सनल लॉ रे बहुत टफ मार्किंग हिच बाकी उडा ठीक ठाक हिच तो सब वर्ष को गोटे क्वेश्चन पेपर सेमति पडियो ओके तो यू हैव टू बी रेडी से पे जो डेली टेस्ट होची जो 6टा क्वेश्चन सेठी एटलीस्ट 2टा क्वेश्चन आपनकर प्रोब्लेम बेस्ड रोची जंती आपन प्रोब्लेम बेस्ड डर लागियोनी आ गोटे कथा प्रोब्लेम बेस्ड एका मनरु पकादिनी सब इलस्ट्रेशन रु पकादि से पे इलस्ट्रेशन ता भलो रे बुझिबे आई विल टेक एक्स्ट्रा टाइम फॉर इलस्ट्रेशन जंती ए 6 नंबर सेक्शन रे बहुत गुडे इलस्ट्रेशन अछि सो दैट आई विल टेल यू टुमारो खाली थ्योरी टा अछि सर हैला सो एडन कंडक्ट कौन लिखिले कहले एटा लास्ट लाइन टा in state of In in the case of NCT of Delhi NCT of Delhi versus Navjot Sandhu 2005, the Supreme Court held that conduct admissible under Section 6 of BSA or Section 8 of Indian Evidence Act. Act must be such that it has a close nexus. It has a close nexus with a fact in issue, or relevant fact, with a fact in issue
or relevant fact. Has a close nexus with a fact in issue or of relevant fact. It actually job directly कोची but से कोची दी close nexus connection close थिया दरकार. Okay. ये जो nexus अपना अबे जो मैंने constitution ना class कोर्स तो doctrines of the constitution अपना पढ़ती हूँ. There are around 40 doctrines around. Okay, ठीक है अधिक paper जोड़ा की Indian constitution में अच्छा. Okay. जल्दी अपना basic structure doctrine वो तरफ पढ़ी थी. Doctrine of occupied field. Okay. बहुत प्रकार डॉक्ट्रिन अछि. Fifth and substance, eclipse, Weber. Okay. Territorial nexus. बहुत गुड़े अच्छे डॉक्ट्रिन. Nexus word से डा. Nexus टा is a negative word. Positive word for nexus is collaboration. धरन्तु आपण आपण फ्रेंड मिसी की प्रिपरेशन करूचंती ओजेएस पई की कोन से परीक्षा पई आपण कोन कहबो मु मो फ्रेंड संगे कोलैबोरेट करूची. ओके आपण या कहबेनी कि मोर मो फ्रेंड संगे नेक्सस अछि. नेक्सस टा जनरली क्रिमिनल गैंग्स भीतर नेक्सस थाए माने बुझामणा बट नेगेटिव काम पे. So it is a negative word. Okay. जेतरे पढ़िबे आपण टेरिटोरियल नेक्सस डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस कॉन्स्टिट्यूशन रे सेतेबेले बुझिबे काहे कि एटा गोटे नेगेटिव वर्ड हम कहै. हैला नेक्स्ट पॉइंट लिखंतो. कंडक्ट एज ए फैक्ट. In the case of V. Prabhakar, in the case of V. Prabhakar versus Basavaraj, okay. Basava माने कौन कन्नड़ रे? Anyone? जे Bangalore रही चंदी की जानी चंदी. You have very famous temples in like Basavanagudi and all. Basavaraj कौन? Basava कौन? कन्नड़ language रे. नहीं. So basically it talks about Nandi, okay, or the bull, vehicle of Lord Shiva. Okay. So anyway, not just V. Prabhakara versus सर वसामा BASA नो VASA. Basavaraj. Basavaraj. V. Prabhakar versus Basavaraj 2022 रो केस एटा. Supreme Court held that so एटा point आला conduct as a fact. Okay, जोटा statute रे दिया है. When a party makes a claim, एटा will ऊपर. When a party makes a claim based on revocation of earlier will, when a party makes a claim based on revocation of earlier will, as indicated in a subsequent will, Sentence टा आउट रे कहबे प्लीज. In the when case a of party makes a claim, in the case of B. Prabhakar versus Basavaraj 2022, Supreme Court held that tapare. when a party makes a claim based on revocation of earlier will, when a party makes a claim
based on revocation of earlier will as indicated in a subsequent will, as indicated in a subsequent will, the said acknowledgement of former, the said acknowledgement of former will. Okay. The said acknowledgement of former would form part of conduct, would form part of conduct leading to a relevant fact, leading to a relevant fact related to fact in issue, leading to a relevant fact related to fact in issue. मानेटा बुझंतु बेसिकली गोटे पार्टी क्लेम करछि कोन ना प्रथमे गोटे ओरिजिनल विल थिला से विल टा रिवोक कराइछि रिवोकेशन हेछि विल रो ओके आ से जो रिवोकेशन हेछि विल रो तो नुआ विल टा हला सब्सिक्वेंट विल टा से थरे सेटा एक्नॉलेज कराइछि it is indicated in the subsequent will that there was the original will, that will has been revoked, this is the new will now. Okay, तेणु जो सेकेंड विल रे आपण लिखि छथि एक्नॉलेज कले इस फर्स्ट विल टा थिला ताको रिवोक करा हला that acknowledgement of the former माने acknowledgement there was the original will that has been revoked. Okay, so say जो fact टा that will form a part of conduct leading to relevant fact related to fact in issue. Okay, so एटी गोटे पार्टी क्लेम करूची कि अर्लियर विल रे हमनारे आया थिला विल रिवोक हे गला नुवा विल रे हमको दिया ही नहीं कम दिया रे व्हाटएवर बट ओके ओरिजिनल विल टा अच्छी बोली और थिला बोली सब्सिक्वेंट विल रे भी लिखा है सेटा सो इट विल बी अ रेलेवेंट फैक्ट बिकॉज़ व्हाई because it is fact and issue comes. जहाँ भी वो claim करती है making it one party is making a claim on the will. That is the fact and issue. Okay, whether that claim on the will, okay, ठीक अच्छी sustainable अच्छी की कौन, ताकि उसे ताकि claim टा मिलिया का ताकि नहीं, that is the fact and issue. So anything related around it will be a relevant fact. Okay, so it is conduct कौन ना will रही original will रे और subsequent will रे acknowledgement कराई थी या आगुरु गोटे ओरिजिनल विल टा थिला से विल टा मैं रिवोक करछु कि मु एटा से मो विल टा रिवोक करछि एबे मु नुवा विल लिखुछि बुझि पाबे सो दिस इज द हेडिंग इज कंडक्ट एज ए फैक्ट ओके तो जदि हम से हिसाब रे देखिबा देयर आर लॉट्स ऑफ इलस्ट्रेशंस एथर सेटा दैट आई विल गो टू टुमारो कहीं ना देखंतु जदि आपण इलस्ट्रेशन टा जो भी स्टैट्यूट रो भलो रे बुझी जाउचंती ताले से जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस पड़िबो आपण को किछि असुविधा हबो ओके आपण को किछि भी असुविधा हबो राइट सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड that each and every illustration you should know and the concept should be clear. Okay. So थरे पढ़ंतु कौन लिखिले आपण what you have written just read it once ja doubt अछि यदि किछ आ भितरे then you ask me. So we have completed till section 6 of course 6 रो जोड़ा हमर illustrations अछि से गुडा गोटे गोटे करी काली ताको देखिबे सर सर जो विल मैटर रे कहले सब्सिक्वेंट रिवोकेशन हला जदि एटा कंडीशन प्रेसिडेंट की सब्सिक्वेंट लागि कि विल ता ही थांता सेटा तो हमें विल रे देखिबा ओके टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल गरी करे अपन देखिबे
ଏଠି ସାର୍ ସେଇଟା ଜିନିଷଟା ରିଲେଟେଡ୍ step ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହବନି, ଫ୍ୟାକ୍ଟିଂ ଇସ୍ୟୁ ହବନି? କୋଉଟା ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ପ୍ରିସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଲାଗିକି ଯୋଉ ୱିଲ୍ ଗୁଡାକ ବନା ହୁଏ। ଯଦି କଣ୍ଡିସନାଲ ୱିଲ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ କେସ୍ ରେ ତୁମକୁ ମିଳିବ, ଏଇ କେସ୍ ରେ ମିଳିବନି, ତାହେଲେ ମ୍ୟାଟର ୱିଲ୍ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଏଠି ସେ କଣ କହୁଛି, ଏଠି ସେ ବେସିକାଲି ସେ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଲେମ କରୁଛନ୍ତି। that claim originates from the original will. Original will ଗୋଟେ ଥିଲା, let's say for example ଗୋଟେ ଦିଟା ତିନିଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଦିଆଯାଇଛି 10% original will, ତାକୁ ପୁଣି ରିଭୋକ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ନୂଆ ଗୋଟେ will ସେ ବନେଇଲେ ଯୋଉଥିରେ ତାକୁ 0 ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ସିଏ ବି ସେଇ ଜିନିଷଟା କ୍ଲେମ କରୁଛି। original will ଥିଲା କଣ, whatever he is claiming something, ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛି। ଏଠି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଲେଖିଲେ ତା ମାନେଟା ହେଲା, ଯେହେତୁ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ରେ ଆକ୍ନୋଲେଜ କରାଯାଇଛି କି ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ ୱିଲ୍ ଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ରିଭୋକ୍ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ that will be a relevant fact. That he is claiming something on that original will be a relevant fact. ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଆକ୍ନୋଲେଜ କରାଯାଇଛି ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ରେ କି ଆମର ଅରିଜିନାଲି ଗୋଟେ ୱିଲ୍ ଥିଲା। ଓକେ, ଆଉ ଯୋଉ ପାର୍ଟି କେସ୍ କରିଛି ତାର ସେ କିଛି କ୍ଲେମ ଅଛି ୱିଲ୍ ଉପରେ, କି ମତେ ବେଶୀ ଦେଇଥିଲେ କି ଯାହା ବି ଦେଇଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ରେ, ସେକେଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ରେ ସେ ଆଗ୍ରିଭ୍ଡ ଅଛି, ଦେଇନାହାନ୍ତି କମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ବି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେତିକି ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, କି ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ରହିଲା, ଯୋଉ acknowledgement in the subsequent will that there was a original will, okay, which was revoked, that will be okay a fact, relevant fact. ठीक है, सो सेतिकी से कहउछथि। ऑफ कोर्स सेटा हमें जदि तार सर्कमस्टेंसेस की कंडीशन चेंज करिबा, ओके, ताले मैटर विल बी डिफरेंट। बट एठी केवल एया देखया पई, ओके, कि that particular fact will be a relevant fact, ए एग्जांपल टा दिया है। ओके, से लिमिटेड जिंस सेठी सुप्रीम कोर्ट कहउछ। ओके, तापरे आउ भी केते गोटे जिंस जंते बा कंडक्ट कथा कहउछ। ठीक अछि, कंडक्ट आपण काहार एडमिसिबल करिवो कोर्ट, पार्टी रही। ओके, से पार्टी रो संगे आउ जदि के थिला जे कि नॉट ए पार्टी, तार कंडक्ट को देखिबार किछि नै, तो सेटा को एडमिस कोर्ट ताको नेबेन। ओके, आउ भी केतेटा जिंस देखियो, सेटा तो एविडेंस आउरी अपन देखियो। फॉर एग्जांपल अपन एंति कहि परिबे कि जदि गोटे अक्यूज्ड अछि एंड ही इज डेड, ओके, also any kind of conspirator who is also dead, okay, बंची नांदे ना accused अछि ना conspirator अछि, okay, सेही केस में कौन हो ना, basically a conspirator who has died, okay, so tara, if you are going to give evidence about his conduct, तो सेटा generally court inadmissible करे। ठीक है, काहे कि ओनली से पार्टी रो ही कंडक्ट एडमिसिबल हो, जा ऊपर केसटा चलछि, दैट मींस द अक्यूज्ड। ओके, अक्यूज्ड का कंडक्ट हियो पार्टी जब को मैं कहली, बाकी जार भी कॉन्स्पिरेटर हरिका जे तार डेथ हो जाइछि, कोर्ट विल नॉट एक्सेप्ट। सो सिंपली आपको केतरा जिंस में देखिबा, काली एतरा में तारा इलस्ट्रेशंस हरिका देखिबा। Illustrations you can go through, and always remember illustrations are very important. All the or almost all the problem based questions are from illustration, either direct illustration or combination of two or more illustration. In the Delhi Judicial Service
पंजाब जुडिशियल सर्विस से माने बहुत गुडे क्वेश्चन सेमती करा तीनटा इलस्ट्रेशन ने पाखापाखि मिसई देबे आ गोटे केस बने इफ यू नो द इलस्ट्रेशंस प्रॉपर्ली आपण किछ असुविधा नहीं हेलो fine so we'll stop here unless you have any doubt जहाँ हमें गोटे जनरल जिनस लिखा तार जो स्पेशल केसेस गुड़ा अच्छी जमी आम रेस्ट चेष्टा केस देखिलु कैन एफआईआर भी रेस्ट चेष्टा ओके इन केस ऑफ ऑफेंस लाइक रेप केमती रेस्ट चेष्टा काम कर ओके सो ऑनलुकर्स और बायस्टैंडर्स ताकर अकाउंट रेस्ट चेष्टा रे जीवो कि नहीं so we saw the difference between who is an onlooker who is a bystander तांकर जदि हमें स्टेटमेंट टाको रेस्ट चेष्टा रे नबा ताले कोन कोन हमको ओके 300 माइंड रखिया पड़ियो ऑल दिस थिंग्स वी हैव सीन तापरे लेटर सेक्शन 5 रे हमें देखिलु मोटिव ओके प्रिपरेशन राइट से पार्ट भी हमें देखिलु सेतरे एक्चुअली मोटिव टा मु बेसिक कहूनी मोटिव इज अ वेरी बिग एरिया व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ मोटिव व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओके जोड़ा मु फर्स्ट कहलिया पड़ो कि हमको इंटेंट ऑफ मोटिव तो सेम ही लागु बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली क्रिमिनल लॉ रे डीटार मानेटा अलग देखिए जो मैंने एटलीस्ट बीएनएस सारी चंदी की आईपीसी पढ़ी चंदी यू सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड इंटेंट स्पेशली इन क्रिमिनल लॉ यदि अपन जानते हैं कहि पर ना उसका भाभी की ऐसे देखिए काली कहबो ओके काली वेडनेसडे फॉर दिन ठीक है फॉर दिन अपन जस्ट टेल मी दैट व्हाट पॉइंट्स डिड यू गेट डिफरेंस बिटवीन इंटेंट एंड मोटिव फाइन सो विल स्टॉप हियर देन जो माने ए वर्ष परीक्षा देबे तो से मन तो जब प्रिपेयर आपनकर टिके अधिक करे पड़िबो आ जो माने नुआ अछंती 2 इयर्स 3 इयर्स करे देबे एटलीस्ट वन आंसर फ्रॉम द डेली आंसर ताको देखि कि लेखन नोटा जले आंसर पढिबे किंतु लिखिबे गोटे आ सेटा आस्ते आस्ते बढ़ेबे जो दिन आपन पूरा 6 रु 6 लिखि परिबे बहुत भलो जो माने एई थर को देबे आपनकर किछि बाट नै आपनको 6 टा रु 6 टा लिखिया पे पड़े you have to write all 6 questions every day तो हाथ बिंदिबो समय हबनी जा भी बट यू हैव टू डू इट अब जदि सब दिन लिखु चंदी बाय द टाइम आपन का रिजल्ट आसीबो आपन मेंस लिखिबे बसे पे आपन किछ और नथिबो सब पूरा एंटायर कोर्स आपन 2-3 थर लिखि लिखि सारथिबे सेटाई हमर दरकार राइटिंग प्रैक्टिस हेलो एटा मैंडेटरी एबे किए 2 वर्ष पर देबो से ठीक अछि ठीक आस्ते आस्ते वार्म अप करिकि तापरे फुल थ्रोटल जीवो जे एई तरह को देबे तो से जा बेले 6 on 6 आपन लिखिया पे पड़ी प्रथमे कष्ट होई पारे बट ठीक टाइम रे जल्दी सारीबे टाइमर लगेगी ओके 15 मिनिट 15 मार्क रो क्वेश्चन तेनु 15 मिनिट रे सारी फाइन सर बहुत Okay. डाउट हुआ हां हां डेली आंसर राइटिंग रा मोर एबे एविडेंस अछि सिथरे हां माने बीएसए टा हां सेटा एविडेंस अछि आपण ताको बीएसए हिसाब रे ये करि परिबे मोस्ट बट ऑफ द सेटा थिंग्स जो आर सेम स्टार्ट ही जेडी जो स्टार्ट ही जी सेटा आपनकर जो एविडेंस एक्ट रो डॉक्यूमेंटरी एविडेंस माने जो पेटेंट और रिलेटेड एम्बिग्यूटी 91 रु 100 जे जोडा छै सेटू स्टार्ट ही नहीं छी नहीं आपण जिबे नवंबर को सेउटू स्टार्ट हिची सेटा अच्छा नवंबर मास रोडा हां सेटा चाली ची कंटिन्यू करची काना मझिरे डिस्कंटिन्यू हे गला मु जतले एडमिटेड थिली तो सेते बेले सेटा हे नथला पुनी अच्छा। मार्च रु सेटा रिज्यूम करिची ओके सेम तो स्टार्ट सबुद्र अछि कोन गेले से सेम एविडेंस एक्ट ता पूरा नवंबर मार्च आ आपनकर अप्रैल हां हां नवंबर और फेब्रुअरी रे बेसिक क्लासेस नथिबो ती तीनटा ही थिबो सेटा एक्चुअली 21 मार्च रु कंटीन्यूअस चली आगे आगे ठीक अछि ओके से गुडा को तारो हमें जो सेक्शन 1 आउ इंट्रोडक्टरी सेगुडा प्रिलिमिनरी सेगुडा सब नवंबर रे आपण पाइबे और से गुडा को रिलेट करिवार अछि बीएसएस संगे जति क्वेश्चन आंसर अछि मॉडल आंसर्स हां प्राय क्वेश्चन जोगुडा दियाई छी
सेगुड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड दिया है रेस टेस्ट ऊपर पढ़ला आपण सेदी लिखि दिबो सेक्शन 6 ऊपर लिखंतु इंडियन एविडेंस एक्ट रे आपण ताको सेक्शन 4 करिकि बीएसएल और ସେଇଥିରେ ମଡେଲ ଆନ୍ସର ଆପଣ ସେଦିନ ଯୋଉ କହିଲେ କି ଆପଣ ଡାଇଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ସବୁ ଆନ୍ସର ରେ ବଟ୍ ମଡେଲ ଆନ୍ସର ରେ ଡାଇଗ୍ରାମସ୍ ଆଜ ସଚ୍ ନାହିଁ ତ ସେଟା ଆମେ ନିଜେ ଇନକର୍ପୋରେଟ नहीं କରିଦେବା नहीं से डायग्राम केमिति करा हबो सेटा दिया है लास्ट पार्ट रे ଆଜ୍ଞା टेक्स्ट ऑफ द डायग्राम बोली कि सेमति कोन लिखि दिबो कि सेंट्रल नोट ता एटा हबो कंट्रोल नोट ଲେଖା ହେଇଛି हां कनेक्टेड नोट्स एगुडा हबो ओके सेगुडा आपण को डायग्राम ता नीचे करे पड़िबो से थ्रू हेल्प नहीं ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ okay fine so then we'll stop here Thank you, sir. Thank you, sir. thank you sir. namaskar Namaskar.